Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Pebbles of Mind class 6 by Magic Mind from Galaxy Publications. Let's start chapter number 8, Adjectives. So let's learn children adjectives. An adjective is a word that describes or adds more information about a noun or a pronoun. बच्चों एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और ऐड करके देता है. लुक एट दीज एक्सप्रेशंस. शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस. ब्यूटिफुल डिस्क्राइब्स द नाउन ड्रेस. अब ड्रेस ब्यूटिफुल है तो ब्यूटिफुल ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है. दे लिव इन अ स्मॉल हाउस. स्मॉल गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउस के हाउस कैसा है, स्मॉल है. द एंग्री डॉग बार्क्ड लाउडली. अब एंग्री डिस्क्राइब्स द नाउन डॉग. ही इज अ ब्रेव बॉय. ब्रेव एड्स टू द मीनिंग ऑफ बॉय. So the words beautiful, small, angry and brave are all adjectives. Okay? Adjectives not only describe nouns. ये केवल nouns को ही describe नहीं करते, but at times make the nouns specific. Noun को कुछ special बना देते हैं. They are used to tell which one, what kind, how many or how much about nouns. ये नाउन के बारे में बताते हैं कि कौन सा और क्या, कितना और कितने. ठीक है, जैसे कि विच वन में हम यूज करेंगे दिस मैन, दैट वुमेन, दीज बुक्स, दोज एनिमल्स. व्हाट काइंड में ह्यूज एनिमल, सोर ऑरेंज, पिंक रोज, स्मॉल बर्ड. हाउ मेनी में सम ऑरेंजेस, ऑल बुक्स, 10 फ्लावर्स. हाउ मच में लिटिल फूड, मच मनी, फुल डे. पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे बच्चों. एन एडजेक्टिव कैन अपीयर ईदर बिफोर और आफ्टर अ नाउन. या तो वो नाउन से पहले लगता है या बाद में, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. एडजेक्टिव बिफोर द नाउन. शी अडॉप्टेड अ फ्रेंडली पपी. ओके. एंड एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन विद अ लिंकिंग वर्ब. द पपी इज फ्रेंडली. सो लिंकिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, इज. Now kinds of adjective. Adjective है क्वालिटी जो कि है होती है जैसे ऑनेस्ट, जेंटल. ये कुछ एग्जाम्पल साथ में दिए हैं. क्वांटिटी लिटिल, सम. नंबर 7 मैनी. डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट. इंटेरोगेटिव हु व्हाट एंड पजेसिव माई हर. नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी देखते हैं पहले. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन और थिंग. किसी भी पर्सन के या चीज़ के वो कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है. उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या फ्लॉज हैं, ये सब हमें पता चलता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के थ्रू. एग्जाम्पल्स. दिस प्रिंसिपल इज अ स्ट्रिक्ट मैन. सोलोमन वॉज अ वाइज रूलर. ग्रैंडमदर टोल्ड अस एन अम्यूजिंग स्टोरी. In these sentences, the words strict, wise and amusing describe qualities of the nouns man, ruler and story respectively. So these words are adjectives of quality. यहाँ पर ये जो words हैं ये हमें noun के बारे में, उनकी qualities के बारे में बता रहे हैं. Okay? So to identify the adjective of quality, ये पता लगाने के लिए कि adjective of quality क्या है, ask the question what kind of. ये आपको क्वेश्चन पूछना है what kind of, किस तरह का. To the noun in the sentence, the answer will be the adjective of quality. Okay? So now adjectives of quantity. An adjective of quantity indicates how much of a thing is meant without giving the exact number. Okay? कि कितनी चीज है, एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको, क्वांटिटी का पता चल जाएगा. Look at these example. There is a little milk in the jug. It did not rain much last year. There is sufficient food for all of us. To find the adjective of quantity, ask the question how much. Okay? आपको क्वांटिटी पता करनी है तो आप क्वेश्चन करेंगे हाउ मच.
to the noun in the given sentence, the answer is the adjective of quantity. Now, adjectives of number. An adjective of number indicates how many persons or things are being referred to. Okay, so you can count it because numbers की बात हो रही है. Example, she added some sugar to the. ये part मैं छोड़ रही हूँ because this is wrong. Okay, so I am starting from other adjectives. Now, other adjectives of number include second from 2, fifth from 5, eighth from 8. तो ये यहाँ से बना. Okay, these are called ordinal adjectives. इन्हें हम कहते हैं ordinal adjectives because they show the position or order of a person or thing in a sequence. एक sequence में अगर चीजें रखी हैं या फिर persons हैं तो ये उनकी positions बताते हैं. Sometimes adjectives of number also function as distributive adjectives. Okay, so which refer to the individual members of a group one at a time. Look at these examples. Each student must bring their own lunch. Neither option is acceptable. So ये हैं distributive adjectives. In these sentences, each and neither refer to individual members of a group. ये हर एक member के लिए कहा गया है and are therefore called distributive adjectives. Remember children, adjective of quantity is an adjective used with an uncountable noun. For example, there is enough food for the family. Quantity use होती है uncountable noun के लिए. An adjective of number is an adjective used with a countable noun. For example, many students went on the educational tour. Now we come on the demonstrative adjectives. A demonstrative adjective is used to point out a specific person, place or thing. किसी specific person को, place को या फिर किसी चीज को जब हमने point out करना होता है तब हम इसका use करते हैं. It comes before a noun and helps to identify or highlight the noun being referred to. Example देखेंगे. This book is very interesting. These apples are fresh and juicy. Certain ideas need more discussion. That house was constructed last year. So आप देखोगे बच्चों कि in these sentences the word this, these, certain and that are demonstrative adjective because they are pointing out particular nouns. क्योंकि वो nouns को particularly specific कर रहे हैं, point out कर रहे हैं. Some more demonstrative adjectives are given here जैसे कि those and such. Now we come on. An interrogative adjective is a word that is used before a noun. Noun से पहले वो use होता है किस लिए? To ask a question about it. Okay, इसके बारे में question पूछने के लिए. Example, what does Rima want? Whose book is this? Which country has the largest population? Each of the words what, which and whose asks a question and is used with a noun. So these are interrogative adjectives. Now, possessive adjectives. A possessive adjective is a word placed before a noun to show ownership or belonging. इसे noun से पहले हम use करते हैं अपनी belonging दिखाने के लिए, अपनी ownership दिखाने के लिए. Examples, our home is very big. His bicycle is very old. Your books are with me. Her dress is beautiful. The words are his, your and her are adjectives showing possession or belonging. Okay, so ये क्या दिखा रहे हैं? Possession और belonging दिखा रहे हैं. So these are possessive adjectives. Now order of adjectives देखते हैं. When multiple adjectives are used together to describe a noun, एक noun को describe करने के लिए जब हम एक से ज़्यादा adjectives का use करते हैं, they follow a specific order based on their type or function. तो अपने function और अपने type के according वो एक specific order को follow करते हैं. This order helps the sentence sound natural and clear. Generally,
we avoid using more than 3 adjectives in a row to keep the sentence simple and easy to understand. 3 से ज़्यादा adjectives को generally avoid किया जाता है एक sentence में, एक रो में रखने के लिए, क्योंकि इससे सेंटेंस सिंपल हो जाता है और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, तो 3 से ज़्यादा नहीं रखते हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. द यूजुअल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश इज, सबसे पहले हम ओपिनियन को रखते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, नाइस, अगली. फिर साइज की बात करते हैं, बिग, स्मॉल, टॉल. एज, यंग, ओल्ड या न्यू. शेप की बात करेंगे, राउंड, स्क्वायर, थिन. कलर की, रेड, ब्लू, ग्रीन. ओरिजिन, इंडियन, अमेरिकन. मटीरियल, वुडन, प्लास्टिक, सिल्क. पर्पस या फिर यूज, राइटिंग, स्लीपिंग, कुकिंग. सो इन अ सेंटेंस द ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स विल बी समथिंग लाइक दिस. I bought a lovely big red Indian carpet. She gifted me a cheap black leather bag. Okay? So इस तरह से हम इनको सीक्वेंस में रखते हैं. Let's start the exercises. Let's practice. Complete these expressions by filling the blanks with the adjectives given in the box. A dash taste. So you can write here a bitter taste. Okay, a dash dog, a faithful dog. A dash jump, risky jump. Right? It was a calm and smooth night. The shiny moonlight covered everything with a soft glow. My friends and I sat on the green grass watching the star. The trees stood still under the dark sky. Okay, so rest blanks you will fill, children, yourself. Now, for each of the following expression, write an adjective in the blanks from the given box. Parents who take love a lot. कैसे parents होते हैं वो? Loving parents. Okay? So you will write here loving. Okay? आगे चलेंगे. A path covered with stone. कैसा पाथ होगा वो? स्टोनी पाथ. A sky with cloud. Cloudy sky. Hair that has the color of gold. Golden hair. Right? So children, like this, rest of the part you will do yourself. Match the adjectives in column A with the nouns in column B. So, delicious, food. Bright, light. Brave, soldier. Soft, feather. Loud. Loud क्या होगा बच्चों? Loud, drum. Clever, girl. Beautiful, beautiful bag. Wet, rain and strong rope. Okay? आगे चलेंगे. Use the following adjective noun pairs in sentences of your own. So आपको यहाँ पर adjective nouns के पेयर मिले हुए हैं, जैसे clean water, strong currents, adventurous trip, rainy season. इसी तरह से और भी हैं, आप उन्हें पढ़िए और इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करिए, जैसे कि वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, स्ट्रॉन्ग करंट्स इन रेनी सीजन, या फिर इन व्हेन इट रेन्स वी शुड beware about strong currents and we should not touch the electric appliances because it may give us strong currents. Adventurous trip, we went
to the adventurous trip last Friday. Rainy season. It is a rainy season now. Dark night. Yesterday it was a dark night. Okay, इसी तरह से आपने बच्चों अपनी sentences बनाने हैं. So children, this chapter ends here. I hope that you have understood it. Thanks for watching. See you soon.